Hello students, welcome to ExamsRoad.com, and this is Uttam Tiwari here with the new lectures of quadratic equation. So as it was promised to you that the new series will continue very soon with class 11, everything will be covered distinctly. So what I request you, since the team is going to work harder from the day to day, okay, and what we request you to please keep supporting on our Telegram channel, and please do subscribe to get the latest notification regarding our videos. And we also organize so many quizzes and live session doubt sessions in our Telegram channel, so you can join it with the link that is t.me/examsroad, and the below links will be given in the description box. So this course is going to start for your so many exams, that is if you talk about JEE, if you talk about your KVPY, and so many Olympiads as well. So NDA, so quadratic equation plays a vital role if you talk about. Okay, so what we're gonna do, we're gonna start from very basic, and I will upgrade you till I wait till you reach to your advanced level of this chapter. So what I request you is please keep supporting, since our team is working so hard to make this content delivered to you. So what we request you to keep supporting, and if you want any kind of request for the upcoming videos or in topic specific topic you want, you can always pin down in the comment box. Okay, so without further a delay, let's start the chapter. So what today we're going to talk about is about introduction, that is the relationship between the roots. Relationship between the roots. Yes. So if we talk about relationship between the roots, so what sort of topics we do cover in this? Relationship between the root, we had started on our क्लास 10th एज वेल, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चैप्टर था एक, तो उसमें हम बहुत कुछ पढ़ के भी आए होंगे. इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड, व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, तो एक बार एनसीईआरटी थ्रू 10th के जाके देख लेना. एंड इफ स्टिल यू डोंट वांट, देन आई एम हियर टू हेल्प यू विद फ्रॉम वेरी बेसिक्स. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, so this is basically your type of equation. An equation is what? That is the part of expression. Yes. So what we studied is about algebraic expression. सारे algebra में हम deal करते हैं पूरे. That is, algebraic expression includes your algebraic expression includes your, yes, that includes your, for example, if you take x plus 2, x cube plus x square minus 4, so on. Any, it's a linear combination. Basically we talk about linear combination between a variable and a constant. What is variable here? Variable is something which is unknown, that is x cube, x square, x here, and constant are 4, 2, okay, and so on, you can repeat. So that is known as, that is algebraic don't go on spelling now, algebraic expression, right? चलो, लेट्स प्रोसीड. बेसिकली स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो बहुत स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक को उठाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टच अ वेरी हार्ड टॉपिक राइट नाउ.
एक एक करके एंड इवन टेल यू कि बेसिक कॉन्सेप्ट से जेई मीन्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनडीए में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या व्हाट अबाउट योर एमटीएससी केवीपी, so many questions we'll be discussing of different state levels. So this topic includes in your complex number as well. आगे जितने भी chapters पढ़ोगे सब में थोड़ा थोड़ा सा you are well aware about quadratic equation, but थोड़ा सा upliftment चाहिए होता है in your 11th class. So what is if you talk about equation, अगर हम खाली equation की बात करें, so equation क्या होता है? Equation और identity, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो इक्वेशन होती है दैट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी हमारी इक्वेशन की, सॉल्व एक्स करके कोई इक्वेशन दी है, ठीक है, x प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री, सो x इज इक्वल्स टू वन, दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट? बट आइडेंटिटी इज समथिंग defined for all real numbers, all real values of variable. So यहाँ पे for all का सिंबल जो मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा दैट विल बी समथिंग इन दिस वे, ठीक है? सो do not forget this symbol, we're gonna use in so many ways. So example I must not give you of this because this is something very basic, ठीक है? So let's proceed. Yeah. So what if we talk about some equation is given to you, अगर कोई equation दी है, example, note down this as a question, first stop and then start solving, ठीक है? इसके बाद मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एंड इसी पे जेई मीन्स पे जो आया क्वेश्चन है, आई विल टेल यू राइट नाउ, ax square plus bx plus c is equals to 9. It is defined for all x belongs to real number. So question is find a b c. अब it is saying it is defined for all real number, obviously it will not ask you to find what is x, ठीक है? That is defined for all x is defined for all real number, so it's gonna not ask you what is basically x, okay? So it is asking you what is abc. So whenever this is mentioned, it is defined for all real number, this is defined for all real number, it states that it is identity, and identity is always defined for like so many things, ठीक है? डिफाइन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? so, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आई रिक्वेस्ट फर्स्टली यू ट्राई फ्रॉम योर एंड, देन इफ यू विल नॉट गेट देन लुक इनटू द वीडियो, ओके? पहले पॉज करके सॉल्व करके कोशिश करना एंड देन व्हाट वी गोना डू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, अब 9 दे रखा है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, राइट? यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली इस फॉर्म में रहती है। हमने इस फॉर्म में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐसे ही लिख लिया हमने, ठीक है? सो व्हाट वी कैन कंपेयर, अवर a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 9, so this is answer. So this method you had to use when only and only it is given x belongs to R and it is defined for all real values, okay? Obviously because you cannot find x, तब सब बता रखा है हमको, डिफाइन कर रखा है, तो इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को क्यों निकालें? अब जेईई मेंस के इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके? सो व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, फाइंड the number of values of a for which a square minus 3 a plus 2 x square plus
a square minus 5a plus 6 plus 6 x plus a square minus 4 is equals to 0, and it is defined for all x belongs to R. It is mentioned, that means it is identity. So what you will do, the same comparison which I told you. So कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को फर्स्ट राइट फ्रॉम योर एंड, पॉज द वीडियो एंड डू इट. ओके, नहीं आएगा देन डू फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ. अदरवाइज अगर आ गया तो 1.25 भी अब 2x पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको देख लो सोल्यूशन को. a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयर कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे 0 दिया है तो व्हाट वी कैन डू, 0x स्क्वायर तो 0y, 0x स्क्वायर तो 0x प्लस कॉन्स्टेंट c. हम कंपेयर कर लेंगे इसको. सो व्हाट सिमिलर वी विल गेट, इसके अगर रूट्स निकालते हैं तो दिस विल कम a minus 1 and a minus 2 equals to 0. So a possible value is 1 and 2. Okay, these are the values you are getting of a, right. Now let's talk about next. A square minus 5a plus 6 is equals to 0. So what the best possible values you will get, a minus 2 and a minus 3, which is equals to 0, and a is equals to 2 comma 3 again. Now next let's look at this. A square minus 4 equals to 0. So a minus 2 and a plus 2 equals to 0, then a is equals to 2 comma minus 2, right. So this is the value which we talk about. Yeah, so these are the a values. So what is the common value for a, what is the common value for a? So if you look into this, common value for a is, you are getting 2 2 2 in every case, right. So अगर 2 2 हमको इतनी बार मिल रहा है, so why we cannot write common value of a is 2. So number of values a is, they ask in the question. अब कोई कहीं पे 2 भी लिखा होगा तो what student does, options में दिए हुए थे 2, the option was 2, the option was 1, and the option was 3, and the option was none of this. So what student does, like what we look into the question, नहीं अगर अच्छे से देखते तो 2 आया हमारा तो I take 2, but this is wrong answer. Right answer is 1, because they ask in the question, if you look into the consideration, find the number of values of a. So 1 is the only value, ठीक है. 2 तो उसका आंसर है, पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, that is only 1. okay, नंबर ऑफ वैल्यू. और हम लोगों को उसमें भी कॉमन देखना होता है, राइट. इंटरसेक्शन वी टॉक अबाउट. सो अगर हम बात करें तो हमारा एज पर द डिग्री, हम लोग इसका बेसिकली नाम रखते हैं सब चीज़ों का, दैट वी टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर, दैट इज वी टॉक अबाउट ए एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. दिस वी से लीनियर कहते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन, राइट, वेयर you get only one root. A is not equals to 0 and only one root is possible. We talk about ax square plus bx plus c. So you get quadratic equation. इसमें a is again not equals to 0, तो इसमें हम लोगों को 2 रूट्स मिलते हैं एज पर द डिग्री. हमको डिग्री पे देखना है. ऐसे क्यूबिक आती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इक्वल्स टू 0. सो इसमें क्यूबिक मिलता है हमको, ठीक है. इसमें हमको 3 रूट्स मिलते हैं. अगेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0, 3 रूट्स. ऐसे ही हमको क्या मिलता है, we get similar, that is
फोर्थ विच इज बाय क्वाड्रेटिक, इसको हम क्वाड्रेंट नहीं कहते हैं, ठीक है, दिस इज बाय क्वाड्रेटिक, दिस इज बाय ई ई बाय क्वाड्रेटिक होता है इसको, इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे कहीं पे भी, बिकॉज ये कोई नई इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है, फोर रूट्स आएंगे इसके, ये कोई नई इक्वेशन नहीं होती है, बाय क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक में ही बदल देते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम इसको आगे। सो ये तो मतलब छोटी मोटी बातें रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो फाइनली लेट्स गो इनटू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So what sort of concept we will be discussing? So this is what quadratic equation की बात करें, so ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, so क्लासीफाई कर लें अगर हम, दैट इज प्योर में और कंप्लीट में, ठीक है, प्योर और इम्प्योर नहीं, प्योर और कंप्लीट बोलते हैं इसको। सो प्योर इफ यू टॉक अबाउट, अगर कोई भी हमको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमको निकालनी है एंड दिस इज ax स्क्वायर प्लस c, किसी भी फॉर्मेट में दे रखा है, सो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी अपॉन ए, अब समवन विल से कि रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, सो दिस इज द बेसिक लाइक योर सिंप्लीफिकेशन। हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, सी के नेगेटिव साइन है, दैट रिप्रेजेंट दैट। फॉर एग्जांपल अगर जिसको नहीं क्लियर हुआ, लेट्स गो विद वन एग्जांपल एज वेल, या आई गेस स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। सो व्हाट वन एग्जांपल वी कैन टेक इज 9x स्क्वायर minus 4 is equals to 0, so x is plus minus 2/3. So this I guess you might all have studied this, right? Okay, yeah. So if we talk about complete, so here b can be 0, here b is 0 in pure, but in complete if you talk about b is non-zero, that means ax square plus bx plus c is there, here only ax square plus c is there in pure, ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको याद रखना पड़ेगा, मतलब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये सब। तो इसको फाइंड करने के हमारे कितने मेथड होते हैं, पहले तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन होता है, उसके बाद दैट इज व्हाट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हम इंटीग्रल्स में पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यू नो वेल वाज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग 10 तक पढ़ के आए हैं, इसलिए नहीं भी पढ़ा तो आई गेस सब जान गए होंगे। सो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो भाई बहुत पहले से पढ़ रखा है, तो दिस यू माइट बी अवेयर। 10th की चीज़ है ये, x को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आवर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, नॉट डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट यू विल बी स्टार्टिंग इन क्लास 12th। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इतनी बात करी तो 8x स्क्वायर माइनस 22x minus 21 equals to 0. So you need to find what is x. Okay, so if you talk about 8 into 21, 8 into 21, so this is 4 into 2 into 7 into 3, and if you talk about this is 4 into 7 28 and 3 21, so you'll get 8x square minus 28x plus 6x minus 21, this is your method of factorization जिसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। so 4x 2x minus 7 plus 3 2x minus 7,
ये 7 इक्वल्स टू 0। सो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -3/4 और 7/2। These are the two possible values with the method of factorization. ठीक है। And if you talk about with that formula, discriminant formula जिसको नहीं पता होगा, जिसको पता है, I suggest you to try from your end and वीडियो को आगे फॉरवर्ड बना के देख लेना। अदरवाइज जिसको नहीं आ रहा, they are always welcome to look into the video. But first I request to try from your end, right? Until you won't, the solution you will not get. So if you use if I give you example, x square minus 64 x plus 256 equals to 0. So we will define x. So here a is 1, b is minus 64 and c is 256. So x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Right. So what you are getting here, that is x is what? 64 plus minus 64 into 64 minus 4 into 1 into 256. If you remember 64 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 256 only. So 2 into 1. So what you get, इसको सॉल्व करोगे तो you get the result. एक बार प्लस में लेना है, 32 प्लस माइनस 16√3 आ जाएगा your answer. ठीक है, तो एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में लेना. Since it is solved near me, so I have written direct value just to save your time. ठीक है, otherwise if I will be solving तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा and this is not worth, like ऑनलाइन का फ़ायदा ही क्या. Okay, so this was your main things, मतलब जो बचपन में अभी कोई हम पढ़ के ही आए हैं. इन अल्फ़ा बीटा का भी if you might remember some, कि अल्फ़ा बीटा के बारे में भी हमने पढ़ा होता है. That is relationship between two roots. जिसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज नॉन ज़ीरो, बी एंड सी बिलोंग्स टू some real number or it can be complex as well. Okay, तो अभी हम आगे पढ़ ही लेंगे. So if you talk about let, अच्छा इसका डेरिवेशन मुझे बताना पड़ेगा, तो आई गेस इट विल टेक टाइम. अदरवाइज यू माइट नो कि दो रूट्स होते हैं इसके, दैट इज व्हाट. इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, शायद पता भी ना हो कि होता भी है किसी किसी को, लेकिन द थिंग विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज alpha plus beta is equals to minus b upon a and alpha into beta is equals to c upon a. Most useful concept this is. Most useful. ठीक है, this is most useful concept. ठीक है, and b square minus 4ac is your d, capital D. This is again something very useful. इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट नाम से जाना जाता है ये. ठीक है, this is something very useful things. So alpha plus beta sum of roots होता है and alpha into beta product of the roots होता है. तो ये तभी यूज करना है when question is mentioned you roots के कारण. Okay, so okay, now if you talk about ax square plus bx plus c is equals to 0. Your one root is alpha, your one root is beta, so you know alpha plus beta is minus b upon a and alpha beta is c upon a. ठीक है, so अगर हम लिखें
Also a alpha square plus b alpha plus c equals to 0, and alpha beta square plus b beta plus c equals to 0. This is equation 1 and this is equation number 2. So yeah, this is equation number 1 and this is equation number 2. So both are the equations. So अगर हम दोनों को add करें, so let me solve it here only. So on adding 1 and 2, what you will be getting, that is a alpha square. This is something very new and very important and बहुत कम लोगों को पता होता है. A alpha square plus beta square plus b alpha plus beta plus c equals to 0. Okay, so एक न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है ये. So just take Sn is equals to alpha n plus beta n और अल्फा n माइनस बीटा n. तो कैसे लिख सकते हैं हम इसका जो बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर. अब हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है. ओके, सो Sn की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो इट विल बी a, मिनिमाइज इट मोर. सो क्या हो जाएगा ये, या इट विल बी व्हाट, a Sn प्लस, अब ये है b अल्फा प्लस बीटा, दैट इज b Sn, सॉरी दिस इज a S2 प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा की डिग्री 1 है तो b S1 प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारा एक जो सीक्वेंस आ जाता है, दिस इज 1 आवर सीक्वेंस. सो इसको हमें करना पड़ेगा याद, दिमाग में रखना पड़ेगा. और ये सीक्वेंस में हमें ये याद नहीं करना है, हमें सीक्वेंस में ये याद करना है कि ये सीक्वेंस जो फॉलो करता है, दिस फॉलोज आवर न्यूटन्स फॉर्मूला. दिस इज a Sn प्लस b Sn माइनस 1 की डिग्री प्लस c Sn माइनस 2 इक्वल्स टू 0. यू कैन क्लियरली लुक इनटू दिस. हो भी रहा है ऐसा, देखो अभी अल्फा प्लस बीटा की डिग्री 2 थी, ठीक है, 2 रखा, फिर एक कम करा 1 हुई, फिर दूसरा कम करा तो एक कांस्टेंट c वाला आ गया, दैट इज 2 कम कर दिया हमने, तो a Sn प्लस b Sn माइनस 1 प्लस c Sn माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट. सो इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन इफ वी टॉक अबाउट JEE means का क्वेश्चन कर लेते हैं. JEE means this question is JEE means JEE 2015 question as well, 2021 question as well, and IIT उस टाइम तक AIEEE होता था, IIT it is mentioned. So इतनी बार ये रिपीट हो गया है. What the question is, let alpha and beta be the roots of x square minus 6x minus 2 equals to 0. Right, equals to 0 with alpha greater than beta. So if an is equals to an minus beta n, an is alpha n minus beta n. Okay, so for n is greater than 1, तो
तो तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। मैं जो ओरिजिनल मेथड है वो भी बता दूंगा, लंबा पड़ेगा, बट आई कैन ओनली टेल यू राइट नाउ, अगर जो लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। So first pause the video and solve it from your end with the original method without using Newton's formula, ठीक है। और what hint you will be getting कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो उसको उसके टर्म्स में लिख के, ए के टर्म्स में लिख के, ए को अल्फा के टर्म्स में लिख के, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में लिख के उसकी वैल्यू पुट कर दो, सो गेट द आंसर। बहुत लंबा हो जाएगा। तो व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस, ठीक है, ये कर लेते हैं। शॉर्टकट इज that is a, you know, asn plus b sn minus 1 plus c sn minus 2 equals to 0. Here a is equals to, look into the question, a is equals to 1, b equals to -6 and c is equals to -2. Everything is visible, right? Equation is given to you, x square minus, I guess I'm not reading clearly, x square minus 6, this is -2, yeah, पावर में नहीं है, don't do the mistake, 6x minus 2, okay, x square minus 6x minus 2, a is equals to 1, b is equals to -6 and c is equals to 2, okay। तो ये चीज़ें हमको पता है, अब हम इसको अप्लाई कैसे करें न्यूटन्स फॉर्मूला को, तो वी नीड टू find what, a10 minus 2a8 upon 2a9 equals to what? So मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अब इसमें मैक्सिमम हम लोगों को कितनी वैल्यू दे रखी है पावर की, दिस इज 10, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को लेनी है हमको। सो पुट n is equals to 10 in equation, ओके। सो a n किसके टर्म में है, पहली बात तो a n का टर्म देखो, if you look into a n, so a n is equals to alpha n minus beta n, इसी टर्म में बताया है क्वेश्चन में भी, अल्फा एन माइनस बीटा है, ठीक है। ए एन इज इक्विवेलेंट टू एस एन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, अभी इस फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको इस फॉर्मूले में, ये वाली फॉर्मूले में रखते हैं। तो ए की वैल्यू हमको क्या पता है, दिस इज 1 एंड ए टू द पावर सबसे मैक्सिमम लेनी है हमको 10 माइनस बी की वैल्यू 6, फिर कम कर देनी है एक पावर, दिस इज a to the power 9 माइनस 2 to the power 8, a8 इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। सो अगर हम इसको सिंक्रोनाइज करें तो a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, अगर हम इसको, ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, वेट, हम इसको सिंक्रोनाइज करें तो व्हाट यू विल गेट, a10 माइनस 2a8 इज इक्वल्स टू 6a9, हमने इसको उधर फेंक दिया ये नेगेटिव वाले को, ठीक है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, अब हम लोगों को क्या चाहिए, a10 माइनस 2a8, हमारा इतना आ गया। सो हम लोग 3a9 और चाहिए हमको यहाँ से, है ना, नहीं 2a9 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 ले आएंगे, तो a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9,
तो बचा हुआ हमारे पे आंसर जो आ जाएगा 2 में से 3 6 को क्या जाएगा, ठीक है, विच इज 3, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हम लोगों को जो चाहिए था वो रिक्वायर्ड लिया है, और दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग। मतलब इसको हमने कैसे भी करके ये बना लिया, और यही बनेगा बिकॉज एक पावर कम होती जाएगी, अल्टीमेटली तुमको यही मिल जाएगा, ठीक है। कोई मेहनत की बात नहीं है इसमें, जो दिया था हम उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर लिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा था। सो आंसर यू आर गेटिंग इज 3. So this was JEE question which was repeated number of times. So what homework question I am going to give you of JEE only, मतलब इतने छोटे से टॉपिक में देखो, आई एम नॉट एक्सप्लेन अ पेनी इवन, पर इतने से कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। सो लेट homework question is, this is homework question. In the next video we'll come with a solution as well, that is alpha and beta denotes roots of equation x square minus 64x plus 256 equals to 0. So you need to find a value of a to the power 3 plus b to the power 5. न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, तो उसमें लग सकता है, and it is mentioned you alpha n minus beta n या alpha n plus beta n, ठीक है। तो हर जगह नहीं लगेगा वो, you will एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना कैसे करा है वो, तो ये पता लग जाएगा कहाँ लगना है वो फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को करना है तुमको 1/8 है, ठीक है। सो जब भी व्हाट हिंट आई कैन टेल यू, कि जब भी अल्फा और बीटा रूट्स दे दे, तो सबसे पहला काम इंस्टेंट यू हैव टू राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, कितना भी रखा है यहाँ पे, दिस इज 256, नहीं सॉरी 64, एंड ए बी इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू 256। अब इसको कैसे भी करके, एंड हियर ए इज सॉरी अल्फा and this is beta, this is again beta, and this is again alpha, ठीक है। अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब पावर 5 होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा पावर 5 होल पावर 1/8, ठीक है। थोड़ी सी गंदगी हो गई, डजंट मैटर, आई हैव नरेटेड एज वेल, ठीक है। तो इसको यू हैव टू सॉल्व, अब इसको कैसे भी करके तुमको ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, और यू हैव टू गेट द फाइनल आंसर, क्या मिल जाएगा तुमको। बहुत easy question है, try solving it, this is so simple, and this was I guess JEE mains, this was JEE question, JEE 2020 question, it is JEE mains 2020, okay। So solve this question, and thank you for watching this video. If you want more such videos, please do follow our Telegram channels, and there will be sharing the DPPs as well daily. And if you want free content in this manner, so what you're waiting for, please press that bell icon for the latest update of these videos. And if you want more such tricks and study material video, do follow our Telegram channel. Okay, and this question answer we'll be discussing in the next video. Thank you so much. ExamsRoad.com, bringing excellence for students.